मैं प्रोफेसर डॉक्टर जमाल मलिक को अपनी जानिब से दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी आज की इस नशिस्त के लिए अपना टाइम स्पेयर किया। आज आप इंशाअल्लाह ताला द जर्मन कंट्रीब्यूशन टू सीरा रिसर्च के उन्वान पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर हमें ये बात जानने का मौका मिलेगा कि जर्मन स्कॉलर्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से क्या तहक़ीक़ी काम है जो दुनिया के सामने पेश किया है। मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद महबूब हसन बुखारी साहब से कि आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मुख्तसर तारुफ़ पेश करें ताकि फिर हम डॉक्टर साहब को बाकायदा इज़हार ख़याल की दावत दें। डॉक्टर साहब का बहुत तहे दिल से मशहूर है कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त इनायत फरमाया। जर्मनी में एरफर्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। जर्मनी के अंदर इस्लाम के हवाले से एक्सपर्टीज़ के तौर पर डॉक्टर साहब जाने जाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला आपसे हम गुफ्तगू सुनेंगे सीरा के हवाले से कि यानी सीरा में जर्मन स्कॉलर्स का क्या contribution है। आज जो है I would like to talk to you with on the German approaches to Seerah, Tarikh Navisi, Tarikh Sazi, what it is. Historiography and the construction of narratives of the past are important discursive devices in establishing identity and solidarity and in providing a normative order. That's important because Seerah is also part of that discourse on historiography. Now, it's important for the normative order of a given society. As such, historiography has always been an influential source of authority, of change, as well as continuity and of self-assertion, and of course, coercion, blasphemy, for instance. One profound example of such historiography is Seerah writing, which seeks to reconstruct the life of the Prophet Muhammad. This is a challenging task. On the one hand, because of the salvation history that perceives history as God's saving work among its chosen people. On the other hand, the challenge arises from an alleged, perennially agonizing problem of authenticity regarding contemporary sources, sources, in addition to their arguable paucity. The resultant scarcity of objective hermeneutical study of the Seerah and Hadith seems to represent a case in point and has been taken up by German-speaking scholars of Islam. मसला तो ये है, वो पूछ रहे हैं कि ये सीरा जो है ये किस हद तक सही हो सकती है, based on the sources that we use, the Muslims. So given the problematic nature of the source material and the various fissures already beginning to appear in early Muslim community after Muhammad's lifetime, it is no wonder that the different voices appearing in Seerah works often reflected party politics and were cultural artifacts based on the elaborations of different and contesting traditions. These path dependencies were often derived from the archives of the self. The same holds true for those who studied the Seerah writers, not from within the Islamic tradition, but from outside of it, emic and etic, such as the German scholars. In the 19th century, these scholars were themselves influenced by biblical historical criticism. You know this Leben Jesu Forschung, which is, they tried to figure out who Jesus Christ was, very much critically.
Thus, the German Orientalist Gustav Weil applied the historical critical method in his biography of Muhammad in 1843, based on Ibn Hisham's edition of Ibn Ishaq's text. And when the Austrian scholar Spenger translated the important letters of Al-Zubayr to the Caliph Abdul Malik. So they did not foresee a later growing critique and even mistrust regarding the validity of the three primary sources of the life of the Prophet, namely the Quran, the Sunnah, and the Seerah, a critique which would only begin to inform Western studies of Islam at the end of the 19th century. जब इन्होंने ये लिखा तो इनको ये एहसास नहीं था कि क्या होने वाला है. Okay? One of the first and foremost critiques of the prophetic tradition was the Hungarian well-known scholar Ignaz Ghulshan, okay, who dismissed the authenticity of the bulk of the Islamic religious tradition on the grounds that the hadiths merely reflected the rampant party strife present after the Prophet's death. Interestingly, this goes quite parallel to Sayyid Ahmad Khan's critique on the hadith. In contrast, both the Semitist Theodor Nöldeke and the Oriental cultural policy scholar C.H. Becker supported the applicability of the historical record, but each for different reasons. Much later, the German Orientalist Rudolf Sellheim stated that no other great founder of an Oriental religion enjoyed so many biographical accounts as Muhammad. Badi baat hai. So they recognized. To find out to what extent the Islamic historical traditions available today preserve their original textual structure, German scholarship seems to have nothing to offer. जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जमाल मलिक जो जर्मनी एरफर्ट यूनिवर्सिटी से आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने ग्रां कदर ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया. आज आपने जर्मन कंट्रीब्यूशन टू सीरा रिसर्च के उन्वान पर अपने ख़यालात का इजहार किया है और मैं ये समझता हूँ कि इस तनाजुर में सीरत को देखना कि हम एक सीरत को इनसाइड राइटर्स की तरफ से देखते हैं कि हमारे अपने सर्कल के अंदर से जो लोग खड़े हुए हैं उन्होंने सीरत को कैसे लिखा है, कैसे देखा है, और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो दूसरे साइड पर लोग खड़े हुए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत नबी तस्लीम ही नहीं करते या जो किसी भी मज़हब के पैरोकार नहीं हैं, तो वो किस तरह से सीरत को देखते हैं. तो गोया कि सीरत निगारी का एक दूसरा पहलू, चाहे आप उसे ओरिएंटलिज्म कहें या आप उसे किसी और नाम से याद रखें, और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, और आप में से मैं जानता हूँ कि कई हज़रात इस वक्त एमफिल पीएचडी में एनरोल हैं और काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टॉक है. इसको रिसर्च के तौर पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है कि जर्मन्स ने जो इस पर काम किया है उसको आप अपने बाकायदा थीसिस का पार्ट बनाएं, और यकीनन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से बहुत कुछ इसमें हमें सीखने और समझने को मिला है.